Hello learners, today we are going to discuss about organometallic compounds. So let's start. Organometallic compounds are those compounds which contain at least one direct metal carbon bond. मीन्स जिनमें मेटल और कार्बन में डायरेक्ट बॉन्ड हो उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं. हियर एम इज मेन ग्रुप, ट्रांजिशन, एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स, ट्रांजिशन metals, right? And here C is carbon atom of an organic molecule, or you can say carbon atom of an organic group. There is a direct bond between metal and carbon, and that bond is ionic, or it is also maybe a covalent. In ionic, we study S block organometallic compounds, and in covalent, we discuss P or D and F block organometallic compounds. Example, RMgX. Here R is any alkyl group, X is an halogen, like CH3MgX. For this example is R2CuLi, and this is a Gilman reagent. So the first condition of organometallic compounds is that there is at least one direct metal carbon bond, right? But there are also some organometallic compounds which have metal carbon bond, but they are not organometallic compounds, right? For example, उनको डिस्कस करने से पहले हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की एक और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं. दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे हमारे पास साइनाइड्स की बात करें हम, या फिर कैल्शियम कार्बाइड की, KCN, or you can say MgC2. These calcium and cyanides have metal carbon bond, but still they are not organometallic compounds. Why? The first reason is we said that in organometallic compounds there is a bond of metal and carbon, right? And we said there is carbon of organic group. But in NaCN, cyanides and carbides are formed inorganic compounds. So this is the reason that they have metal carbon bond, but still they are not organometallic compounds. Next reason है, अगर हम NaCN को लिखें Na positive Cn negative, then their Na positive exists in its most stable state.
बट यहाँ पर हमने क्या बोला, organometallic compounds can change its oxidation state, but in NaCN, Na positive exist in more stable state, so it cannot change its oxidation state, means it cannot change +1 to +3, so it is not an organometallic compound. नेक्स्ट है हमारे पास, इन द सेम वे हमारे पास विल्किंसन कैटालिस्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो नहीं है, बट स्टिल इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. वाई सो? अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें हम, देन दिस इज RH, PPH3, 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 and then there is one Cl. This is Wilkinson catalyst, and this catalyst is used for hydrogenation of alkenes and alkynes. In this Wilkinson catalyst, metal and carbon bond is absent, but still this is organometallic compound, because during the process of catalytic cycle of hydrogenation of alkenes, there is a stage come when there is a formation of metal carbon bond, right? जब हम कैटालिटिक साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर एक मेटल और कार्बन की स्टेज आ जाती है, जिस वजह से ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. डायरेक्ट वे से नहीं, बट इनडायरेक्ट वे से ये हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, राइट? द फर्स्ट organometallic compound in transition metal is G-salt. Structure of G-salt: PT, Cl, 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 and then there is CH2, CH2, and there is negative charge. So the oxidation state of platinum is there, X. On chlorine there is -1, so -1, -1, -1. Total -3 is equal to, all over the charge on complex is -1. So X is equal to -1 plus 3 is equal to 2. So oxidation state is +2, right? So this is all about introduction of organometallic compounds. Next we discuss hapticity. Hapticity, actually this is a property of a ligand. So total number of donor atom of ligand directly attached to metal atom. This is called hapticity. Means कितने डोनर एटम के साथ हमारी मेटल अटैच्ड है, राइट? Hapticity is denoted by a prefix eta and a superscript X, which indicates that number of donor atom directly attached to metal atom, right? जैसे हम डिस्कस करें, अगर साइक्लोपेंटा डाइइनाइल हमारे CP लिगेंड को
then for this there is only one carbon atom. There is only one carbon donor atom. So its hapticity is eta 1, Cp. Cp is cyclopentadiene. In the same way अगर हम डिस्कस करें, then this is 1 2 3 4 5 donor atom, so it is eta 5 Cp. सेम वे अगर हम इसको डिस्कस करें कुछ इस तरह से, then this is 1 2 3, only 3 donor atom donates, right? So this is eta 3 Cp. Now their Cp is a Fluxonial ligand. Fluxonial ligand is that ligand which can change its hapticity, or you can say that those ligands which can show more than one hapticity, like Cp. Cp can show eta 1, eta 5 and eta 3. अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में हैप्टिसिटी नहीं दी हुई है, देन यू कैन चूज द मैक्सिमम हैप्टिसिटी, राइट? सो हैप्टिसिटी को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो हमारे पास फर्स्ट है दिस. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक डोनर एटम है, डेट इज कार्बन. सो इट्स हैप्टिसिटी इज eta 1 allyl. This is eta 1 monohapto. For this their hapticity is eta 1, बिकॉज यहाँ पर भी सिर्फ एक ही कार्बन एटम से डोनेशन हो रही है. डोंट काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, देयर आर डबल बॉन्ड, बट वी जस्ट सी कि कितने डोनर एटम हैं. सो देयर इज ओनली वन डोनर एटम, सो हैप्टिसिटी इज 1. सो eta 1 कार्बीन. In the third, so there is hapticity 1 2 3. There is 3 donor atoms, so their hapticity is eta 3 allyl. Next, this is 1 2 3 4 donor atoms, so eta 4 COD, and here COD is cyclooctadiene. For this there is 8 donor atoms, 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is eta 8 COT. COT is cyclooctatetraene, right? So hope you like this video. Thanks for watching. Stay blessed. Keep smiling.